So today we are going to see operators. There are several kinds of operators we have in SQL. First one is arithmetic operators. Next we'll see comparison operators. The last one we'll see logical operators. Okay. So let's start with what is operator. Okay. So operator is SQL. Operator in SQL are used to specify the condition. कोई अगर condition specify करना है, right? तो हम ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे विद इन द क्वेरी, राइट? क्यों यूज़ करेंगे? टू मैनिपुलेट द डेटा, राइट? सो दे आर प्राइमरीली यूज्ड इन वेयर क्लॉज. सो मोस्टली जो ऑपरेटर्स रहते हैं वेयर क्लॉज में आप देख सकते हो, राइट? सो लेकिन वेयर क्लॉज के अलावा हम उसको सेलेक्ट स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, अपडेट में लिख सकते हैं, डिलीट के साथ यूज़ कर सकते हैं, एसक्यूएल स्टेटमेंट में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, राइट? सो वो सारे ऑपरेटर्स क्लासिफाइड हैं अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड comparison operators, right? So we'll see one by one. So in arithmetic operators, these operators perform mathematical operation on numeric data, right? हमें अगर summation करना है, addition करना है दो या multiple numbers का, then we go for arithmetical addition operator. To subtract multiple values, subtract one value from another value, एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करना है, देन दिस सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर. मल्टीप्लिकेशन करना है, देन वी कैन यूज स्टार. डिवाइड करना है, देन डिविजन. रिमाइंडर निकालना है, तो परसेंटाइल. सो दीज आर द ऑपरेटर्स वी हैव इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. लेट्स चेक वन बाय वन. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP. select ID, comma, name, comma, salary, right? From EMP. मुझे 3 ही कॉलम डिस्प्ले करना है, so that's why I'm taking only through 3 columns. Let's run this. See, so these are the columns we are displaying. 4 records we have. First one is ID column, next column is name and third one is salary. मैं इतने ही डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है? I wanted to add 1,000 rupees while displaying the salary, right? तो मैं addition symbol यूज़ करूँगा, right? Plus 1,000, right? जो भी सैलरी डिस्प्ले होने जा रहा है, हर एक सैलरी में वो 1,000 ऐड करके डिस्प्ले करेगा, right? Let me execute the query. See, हर एक एम्प्लॉय की सैलरी 1,000 रुपीज़ से बढ़ गई है, right? So this is the use of the arithmetic operator plus. Right? The second operator is subtraction. Let's say salary से मुझे 1,000 रुपीज़ माइनस करना है, right? 1,000 रुपीज़ माइनस करना है. So I can use minus 1,000. तो हर एक एम्प्लॉय की सैलरी वैल्यू से 1,000 रुपीज़ माइनस हो जाए, right? See, 65, 29, 39, 34. So this is the subtraction arithmetic operator. The third one is multiplication. अब सैलरी में मुझे मल्टीप्लिकेशन करना. आप किसी भी न्यूमेरिकल कॉलम के साथ ये ऑपरेशन कर सकते हो, राइट? सैलरी इनटू, लेट्स से मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ मैं, सैलरी इनटू 2, डबल कर रहा हूँ मैं सैलरी को. सी 132, 60 likewise. So star is used to multiply 2 numbers. 2 numbers का मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, तो हम स्टार यूज़ करेंगे, राइट? So this is an multiplication symbol, the multiplication, the arithmetic operator. डिवाइड करना है सैलरी से, सैलरी को मुझे 2 से डिवाइड करना है. सैलरी डिवाइड बाई 2. रन. So this is the division. सैलरी डिवाइड बाई 2. आउटकम यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन यूज डिवाइड ऑपरेटर, राइट? द डिवीजन ऑपरेटर. हमें रिमाइंडर निकालना है, किसी नंबर का रिमाइंडर निकालना है, ठीक है? सैलरी डिवाइड बाई 2. सैलरी डिवाइड बाई 2 करूँगा तो जब वो डिवीजन कंप्लीट होगा, उसमें जो कुछ भी रिमाइंडर बच जाता है तो वो हमें
रिटर्न कर देता है. सॉरी, शुड बी परसेंटाइल. दिस इज टू गेट द रिमाइंडर ऑफ द पर्टिकुलर वैल्यू. अब हर एक सैलरी इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 2, सो दैट्स वाई यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा. राइट, परफेक्टली डिविजिबल बाई 2 मतलब क्या है? जैसे कि किसी भी नंबर के एंडिंग में 0, 2, 4, 6, 8 ऐसा जो कुछ भी नंबर आता है, राइट, इवन नंबर, तो वो परफेक्टली डिविजिबल होता है. राइट, देन दैट्स वाई वी आर नॉट गेटिंग एनी रिमाइंडर हियर. सो लेट्स से परसेंटाइल 3. सो फर्स्ट सैलरी वैल्यू को 3 से डिवाइड करने के बाद मेरा रिमाइंडर 0 आया, मतलब दैट पर्टिकुलर सैलरी इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 3. यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है. राइट, इन शॉर्ट, टू गेट द रिमाइंडर फ्रॉम द नंबर आफ्टर डिवाइडिंग द नंबर बाय सम अदर नंबर, जो भी रिमाइंडर बचता है वो परसेंटाइल से हम निकाल सकते हैं. राइट, so this is about the arithmetic operators. You can use wherever required to do some mathematical operations. जो कुछ भी mathematical calculation करना है, आप ये arithmetic operators use कर सकते. So the next operator type is comparison operator. The list of comparison operators are equals to, not equal to, not equal to ANSI standard से है और SQL standard है. Right, and greater than, less than, greater than or equals to, and less than or equals to. These are the, what kind of operators? These are comparison operator. दो numbers का comparison करना है. Right, so you can use comparison operator. So let's take an example. Basically do it. Select ID comma name from EMP. तो ये वाला हटा देता हूँ, ठीक है. So let me display only these two columns. Right, और एक डिस्प्ले करना है मुझे सैलरी. ठीक है, 3 columns. While doing comparison, while doing the comparison, we can use these operators. Let's say where salary is equals to 66,000. कौन सा वाला रिकॉर्ड मिलेगा मुझे? ये वाला. राइट, लेट्स चेक. इक्वल्स टू, जो कुछ भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा जिस भी रिकॉर्ड का, वो वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले करेंगे. लेट्स टेक another example. Select star from EMP. I want all the columns to be displayed. Right, I wanted to display those employees who works in IT department, where DPT is equals to I. Right, so these two records should be displayed. So यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? इक्वल्स यूज कर रहे हैं. जहाँ पे भी जिस रिकॉर्ड का भी डिपार्टमेंट इक्वल्स टू IT मिला, वो सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कर दो. Let me run this query. See, these are the 2 records it is display. Correct? So let me display all the records first now to check the next operator. So next operator is not equals to, where salary where DPT not equals to, कोई भी कॉलम यूज कर सकते हो आप. ठीक है, वैलिडेशन के लिए. यहाँ पे मुझे डिपार्टमेंट कॉलम पे वैलिडेशन कर लगाना है. मैं चेक कर रहा हूँ where DPT is not equals to IT. जो भी IT वाले नहीं है एम्प्लॉइज, वो सारे मुझे डिस्प्ले करना है. where DPT not equals to IT. Let me run this. See, बाकी सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो गए. जिसका भी डिपार्टमेंट IT है, वो वाले रिकॉर्ड्स डिस्प्ले नहीं हुए हैं. राइट,
So one more operator is works as not equals to. So let's choose less than और greater than. इसको हम कैसे पढ़ेंगे? Not equals. So let's use this. Let's check. वो सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं जिसका डिपार्टमेंट IT नहीं है. With department is not equals to IT. Right? Let's check the next operator is greater than. This is greater than, this is less than. Where salary greater than 50,000. I wanted to display employees who is having salary greater than. इस सिंबल का मुंह किस तरफ है? सैलरी की तरफ है. मतलब सैलरी 50,000 से ज़्यादा रहना चाहिए तभी वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा. See, we have only one employee who is having salary greater than 50,000. I want all the employees who is having salary less than 50,000. Let's check. See, these are the employees who is having salary less than 50,000. Correct? This is about equals to, not equals to, greater than, less than. The next two operators are greater than or equals to, less than or equals to. Right? Let me display all the records first. ठीक है. Salary कितनी चाहिए मुझे? Salary greater than or equals to 40,000. Greater than or equals to 40,000. Which are the records satisfies this condition? कौन से record ये वाला condition satisfy करेगा? ये वाला नहीं करेगा. Salary 40,000 से ऊपर चाहिए, ये वाला भी नहीं satisfy करेगा. Salary should be, ये वाला satisfy करेगा, right? ये 66,000 है. ये वाला record नहीं करेगा satisfy condition. This record greater than or equals to, right? एक तो greater होना चाहिए, नहीं तो at least equals to तो होना चाहिए. ये record satisfy करेगा ये वाला condition. The last record is not again satisfying the condition. Only two records are satisfying the condition. तो check करते हैं. Two records display हो रहे हैं 66,000 वाला and 40,000, right? So this is greater than or equals to. Like we get all the data. Let's check less than or equals to, right? So salary is less than or equals to 30,000 चाहिए मुझे, right? Salary should be less than or equals to, less than or equals to, less than or equals to 30,000. This is greater than 30,000. This is 30,000 exact. मतलब less than or equals to 30,000. ये वाला चलेगा. This one is not less than 30,000 or not even 30,000. This one also not less than 30,000. This query should return only one record which is satisfying the condition. Let's check. See, this is less than or equals to. So this is about the comparison operators. So the next operators we'll see is logical operators. Logical operators. These operators are used to combine multiple condition in SQL statement. ये ऑपरेटर कब यूज करेंगे? जब मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करना है, राइट? द फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, ठीक है? नॉट इज टू, ये सभी का उल्टा है, राइट? जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तब ये रिटर्न करेगा ट्रू वैल्यू. ऑल दीज ऑपरेटर रिटर्न्स द ट्रू और फॉल्स वैल्यू if the condition satisfied. Right? Let's come here to database. Let's check the data first. Let's take an example. Select star from EMP where DPT is equals to I and salary is equals to 30,000, right? So this condition DPT IT रहना चाहिए,
सैलरी 30,000 रहना चाहिए। ऐसा कंडीशन कौन सा रिकॉर्ड सेटिस्फाई करेगा? पहले तो डिपार्टमेंट आईटी चाहिए। सो दीज आर द टू रिकॉर्ड्स वेयर डिपार्टमेंट इज आईटी, एंड इट मीन्स व्हाट? द कंडीशन, both the condition should satisfy or both the condition should return the true value. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी ही चाहिए। फर्स्ट कंडीशन इज डिपार्टमेंट आईटी रहना चाहिए, सो इन दोनों रिकॉर्ड्स ने वो सेटिस्फाई किया है। सो सेकेंड कंडीशन सेज सैलरी शुड बी इक्वल्स टू 30,000। ये वाला रिकॉर्ड सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये कंडीशन, दैट्स वाई इट विल रिटर्न ओनली दिस रिकॉर्ड। लेट्स चेक। See, only we got first 30,000 record, right? Department is equals to IT and salary is equals to 30,000. With the conditions it is satisfying, so that's why we got this record. Let's check all the data. This is AND operator. AND operator क्या कहता है? So जब दोनों condition satisfy होंगे उसी रिकॉर्ड को हमें पिक करना है, उन सारे रिकॉर्ड्स को हमें पिक करना है। और रिकॉर्ड एक हो सकते हैं या फिर मल्टीपल रिकॉर्ड सेम कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं, राइट? सो द नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर इज और, राइट? सैलरी सर डीपीटी इज इक्वल्स टू आईटी रहना चाहिए, और डीपीटी इज इक्वल्स टू एक तो आईटी रहना चाहिए या फिर फाइनेंस रहना चाहिए। सो व्हाट और ऑपरेटर सेज इज इवन इफ द रिकॉर्ड इज सेटिस्फाइंग वन कंडीशन अमॉन्ग्स दीज टू, रिटर्न दैट रिकॉर्ड। मतलब वो रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले करना है। कौन सा भी एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई करता है कोई भी रिकॉर्ड तो उसको डिस्प्ले करना है। पहला डीपीटी इज इक्वल्स टू आईटी, डीपीटी इज इक्वल्स टू फाइनेंस। ये रिकॉर्ड दूसरा वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये दो रिकॉर्ड पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। द लास्ट वन इज नॉट सेटिस्फाइंग एनी वन ऑफ द कंडीशन, सो लेट्स चेक हाउ मेनी रिकॉर्ड इट शुड रिटर्न। दीज थ्री रिकॉर्ड्स विच आर सेटिस्फाइंग एटलीस्ट वन कंडीशन, एटलीस्ट वन कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा तो वो डिस्प्ले करेगा उस रिकॉर्ड को। तो अगर दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है देन वेल एंड गुड, फिर भी वो उस रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा वो, ठीक है? दिस इज अबाउट और ऑपरेटर। लेट्स चेक ऑल द डेटा, ठीक है? द लास्ट वन इज नॉट ऑपरेटर, ठीक है? नॉट ऑपरेटर वेयर डीपीटी नॉट डीपीटी इज इक्वल्स टू फाइनेंस। वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा जहाँ पे भी डिपार्टमेंट कॉलम में फाइनेंस नहीं मिलेगा, वेयर डीपीटी इज नॉट इक्वल्स टू FI, राइट? सो दिस इज अबाउट द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर्स, राइट? Logical operators are and, or, and not. So these are the operators we can use to combine the multiple conditions here, right? This is all about the operators